Hello and welcome to Frankly Speaking. You're the man in the hot seat. What should I call you? Strategist of Mamata Banerjee, MK Stalin, Jagan Reddy, as well as Nitish Kumar in the past, Arvind Kejriwal, or are you full-time Babu Moshai now in Kolkata, where I'm meeting you, Mr. Prashant Kishore? I'm small-time political aide to Mamata Banerjee. That's the right thing to say right now. Small time? Yes. When is a person like you ever going to be seen as a small-time aide when you have resurrected careers and various terms of various chief ministers, whether it is Arvind Kejriwal, whether it is Nitish Kumar and the RJD Mahagathbandhan in 2015 in Bihar, whether it is Jagan Reddy, now MK Stalin and Mamata Banerjee? Well, I've said this before also, we are highly overrated. The names which you are mentioning, they are chief ministers or whoever they are, because of their own ability, because of their own support. We just contribute a little bit on the margin, maybe. That's up for the debate. But we are not someone who can create or help anyone become chief minister. We are very, very small people who try to probably help and be of aid to the politicians who choose to work with us in their effort to get elected. And you should not overrate or overcredit us. प्रशांत किशोर जी, ये थोड़ा चेंज नहीं हो गया कैरेक्टर में? परसों आपने एक ट्वीट के माध्यम से पूरी देश में खलबली मचा दी, क्योंकि सबने सोचा था 2021 के इलेक्शंस हैं बंगाल, असम, तमिलनाडु में, तो गर्मी कहीं जनवरी एंड में शुरू होगी। आपने दिसंबर की सर्दी में एकदम गर्मी कर दी ट्वीट से कि बीजेपी 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगा बंगाल में। और ये आपने कहा एक दिन अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं और चाणक्य कहे जाते हैं इलेक्शन और सेफोलॉजी और स्ट्रैटेजी के देश भर में, उनकी विजिट के बाद मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या that was bravado to keep your own flock together, or was that a challenge to the BJP? No, it's just a conviction. It is not a bravado. See, Amit Shah is a very big name. He has a tremendous track record when it comes to winning elections. While that is a fact, the other fact is, since 2014, since the time India has started to see what he is capable of and what he does, except for UP and maybe a couple of other states like Tripura and Haryana in 2014, BJP, even in their victories, have underperformed what Mr. Shah has ever claimed. Be it Gujarat, be it 3 states, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan. As recently as Delhi, he claimed that BJP is going to win 45 seats, while they ended up 8 seats. And I can give you example after example, except for UP in 2017. So, you know, he's a politician, he's one of the tall leaders of the party, he's a chief campaigner, so he is obliged to say what he thinks, and that to keep the morale. That's also part of his strategy, maybe psychological warfare. But let's stick to the fact. I'm not the one who kind of make this kind of predictions ever in my elections. I've done 7, I've lost 1 6. I've never made this kind of open predictions. The reason I made this 2 days back is because I see the huge difference between what we are observing on the ground and what is being presented or being trying to showcase at the national level. I want to charge you that maybe the psychological warfare is what you're trying to thwart through that tweet. Absolutely. Because you said that I will quit this space. ये space कौन सी आप जो quit करेंगे? Political aid की space या Twitter की space? No, what is Twitter? जो Twitter में तो आप थे ही नहीं. Twitter पे मैं हूँ ही नहीं. मैं तो total मैंने जिंदगी में 80 tweet करे हैं. So no, I was expecting this question, that am I trying to put a counter argument just to counter what Mr. Amit Shah has said? No, not at all. I actually believe in this, that BJP will struggle to cross double digit. That means they will be below 100. And to add credence to it, I have put my neck on the line. I am telling that if BJP does any better, I will quit this space, what I am doing since last 7 years. So are you? If BJP, any BJP leader is convinced that I'm wrong and BJP is going to win 200 seats, I challenge them openly
that they should also join this, and they should tell that if BJP doesn't get 200 seats, are they going to quit their respective positions? I again see a political streak that you are trying to put there. You're putting a bait for them. So far, the TMC, so far Mamata Banerjee has been reactive and the BJP is setting the agenda. Now, by saying this, कि मैंने ये कहा है, you are trying to put the TMC as calling the shots and the BJP falling into the trap. All I'm trying to tell you that people who visit a state, say, twice or thrice in 3 months, they seem to have the crystal ball and call the election that how many seats BJP is going to win. Some of them, they cannot even name the number of districts of West Bengal. But somehow they seem to be knowing how West Bengal is going to vote. That amazes me. What you might be very intelligent, you might be Chanakya or whoever you want to call yourself, but how much you know about Bengal to be able to call election only on the basis of 2 days or 3 days visit once in 3 months. And if you are so convinced, let's put the money where your mouth is. I'm saying I have. Are you challenging Mr. Amit Shah or are you challenging I'm not naming Kailash Vijayvargiya, Mukul Roy? Who are you challenging? I'm saying anyone who wants to say that BJP is going to win 200, and if they don't win, to add credence to what they are claiming, they should put their neck on the line and say that if BJP doesn't get 200, are they willing to प्रशांत किशोर जी, मैं आपसे उल्टा सवाल पूछती हूँ और मैं ये पूछती हूँ कि बंगाल की डिस्ट्रिक्ट्स का पता शायद आप कह रहे हैं बीजेपी वालों को नहीं है. मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा बहुत ऐसे लोगों को जिनको ये नहीं. आपको कितना पता है? आप भी तो बाहरी हैं. ये इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर वाला खेल आप बिहार में खेल चुके हैं 2015 में. ये पुराना फॉर्मूला है. नीतीश कुमार जीत गए थे बिहारी वर्सेस बाहरी में. ऐसा बंगाल में होगा, ये इसका आपको कहां से अंदाजा हो रहा है? नंबर 1. नंबर 2, लेट मी आस्क यू, लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी और अमित शाह का नारा था 22 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस. तृणमूल कांग्रेस ने उसको तवज्जो नहीं दी थी कि ये पॉसिबल ही नहीं है. 18 पहुंचे थे अमित शाह. ट्रैक रिकॉर्ड आप किसका चैलेंज कर रहे हैं? आपको सोच के करना चाहिए. उत्तर प्रदेश 2014 में जब अमित शाह गए थे, बीजेपी की जो हालत थी, आप जानते हैं, हम जानते हैं, 15 साल से बीजेपी का वहां अस्तित्व नहीं था. 2014 तो मैं कम से कम जरूर जानता हूं. हाँ. बाकी मैं जानू ना जानू. हाँ. मैं क्योंकि आप बीजेपी के साथ. मैं किसी के ट्रैक रिकॉर्ड को चैलेंज नहीं कर रहा हूं. मैंने पहले कहा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन उनके ट्रैक रिकॉर्ड का एक हिस्सा ये भी है कि समटाइम्स और rather often he makes outlandish claims when it comes to state elections, and more often than not, except for 2 or 3 examples in last 5 years, BJP has underperformed, and this is not my assessment. This is the hard fact. BJP has underperformed the tall claims of Mr. Shah as far as state elections are concerned, and you can go back and ask your team to check. And I'm again repeating, check all state elections since 2014. Despite this, I want to challenge you with numbers. I'm talking about Lok Sabha elections, 2014 to 2019. Everybody said that the BJP has peaked with 282 seats. They went up and posted 303. Yes. And UP decreased, West Bengal increased. It is strategies like this that work for the BJP in Lok Sabha 2019. Since then, 1 minute, last night, DDC elections, Jammu and Kashmir, single largest party, the BJP, growing footprint, presence. Absolutely. It is not a state election, I understand, it is a district election. Look at Telangana, but backyard of where you work. You're municipal elections. Apples and oranges. I am sticking to state elections wherever BJP has faced formidable competitors in political competitors in a state setting. They have struggled. You look, they have lost Delhi. They lost Jharkhand. They barely managed Haryana, and they lost Maharashtra. Now, since 2019, I can take you back till 2014 onwards. They have not done as well as they claim. I repeat, they have done very well for themselves, but they have not done anywhere close to what is being claimed. आपको भी पता है जो आप कह रहे हैं. If you were the political aide of the BJP, you would have explained Maharashtra differently. If you were but the fact is, I recall you interviewing Mr. Shah. He said, Mr. Devendra Fadnavis is going to be the chief minister, and we know the fact. Now, if you say that no, after the victory of BJP, so-called victory, some others came together, then
That would apply to Madhya Pradesh also. That would apply to Bihar also. Bihar, BJP did not win in 2014, but they formed the government afterwards. So you cannot have both way. So प्रशांत किशोर जी, मैं ब्रास टैक्स पे आती हूँ. लोकसभा इलेक्शंस लास्ट ईयर तक तो तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को फोर्स ही नहीं मानता था बंगाल में. That only Trinamool can answer. I can only answer what is happening now. 3 सीट्स इन 2016 असेंबली इलेक्शंस टू नाउ 99 तो कम से कम आप कह रहे हैं कि वो पहुंच सकते हैं. Absolutely. हाँ? तो 3 से 99. Let's make no mistake. BJP has emerged as one of the very strong political forces in Bengal. Very strong, or the only one challenger to Mamata Banerjee? Only one. Only one? You admit the yes, BJP is the only challenger? Absolutely. See, once you secure 40% vote share in a state, you are a force to reckon with. But moving from 40% to 45% in the context of Bengal, those who understand Bengal, it's easier said than done. Particularly because if you look at the track record of BJP, they seem to underperform in state elections vis-a-vis their general election. Their average underperformance is in low double digit, close to about 13%. So compared to what they have got in Lok Sabha, usually they get double digit decline in state elections. So even if I say Bengal is different, BJP has put a lot of effort, maybe so you're putting all your reliance on mathematics and not on chemistry. I'm giving you one example. Chemistry बहुत जरूरी होती है प्रशांत किशोर जी. और chemistry में मैं आपको बताऊं, chemistry की बात अगर बताऊं, भगदड़ मची हुई है तृणमूल के कैंप में. लोग छोड़ जा रहे हैं. जो कल तक आपके आंखों के तारे थे, वो अब दूसरी तरफ जाके आपको नाम बुला रहे हैं. Let's stick to this भगदड़ मची हुई है. Now Trinamool has got close to 225 MLAs. None less than the Prime Minister himself, I repeat, none less than the Prime Minister himself said 40 are in touch. 40 MLAs of Trinamool are in touch with BJP and they are going to join BJP. He said it in 2009. 19, sorry. We are sitting in December 2020 and the number, I'm quoting you, Bhagdad machi hui hai, the number has reached 7 MLA. Hold on. You know, in last 4 or 5 years, whoever has covered the political space, they know that before elections, MLAs leaving their parties, joining BJP is nothing new. In the context of what Mr. Prime Minister has said, against the claim of 45 MLAs, 7 MLAs have gone till date. And I don't want to get into who they are. वो कहते हैं ना इब्तिदाई इश्क में आगे आगे देखिए होता है क्या? बिल्कुल. So आगे तो इश्क जो है बीजेपी का और तृणमूल के डिफेक्टर्स का भी शुरू ही हुआ है. 1.5 साल में अगर आपने 45 टाइमिंग भी कोई चीज होती है. बिल्कुल सही बात है. आपने उस समय तो ये नहीं कहा था कि लोग विधानसभा के टाइम पर लोग आएंगे. आपने ये कहा था कि लोकसभा के इलेक्शंस के बाद तृणमूल में भगदड़ मचेगी, 45 से ज्यादा MLA बीजेपी ज्वाइन कर जाएंगे. अभी तक 6 MLA टोटल गए हैं. अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि बीजेपी के लोग यहां क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं. बीजेपी के पास कोई MLA है ही नहीं यहां पर, तो कौन से बीजेपी के MLA यहां ज्वाइन कर जाएंगे. आप बहुत सिंपलिस्टिकली बता रहे हैं. और आप बाबू मोशाई, कोलकाता में हम बात कर रहे हैं, बाबू मोशाई बन के आप दिखा रहे हैं कि आप बंगाल को इतना अच्छा समझते हैं कि बाहर से कोई समझ नहीं. मैं बिल्कुल नहीं समझता हूं, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि आई हैव स्पेंड 1 year, day and night, we are here on the ground. I'm not coming from Delhi, sitting in Delhi or Bombay and trying to call the elections or trying to claim to be knowing Bengal. And I would probably not know Bengal for even next 10 years if I continue to work here. But I definitely know much more than those who just come here on a 2-day trip. So you are banking once again on the अंदर वाले बाहर वाले फॉर्मूला. अब मैं इसका एग्जांपल दूंगा. I'm giving you hard facts and data basis which I'm claiming that BJP would find difficult to cross 99 or cross 100. See, BJP, because of their own policy and positioning, they are aiming to address the 70% of Bengal. They're not even addressing 100%. बिल्कुल 30% मुस्लिम वोट है वो आपका. I don't know that you know. I'm saying BJP is trying to address 70% of the Bengal. That means any logical person can understand this. They need a much higher strike rate in that 70% because their denominator is 70 while our denominator is 100.
That's one You fact. presume it's 100. Maybe much out of the 70% does not look at you as an alternative. I'm telling you on what basis I'm claiming that BJP would not cross 100. It's not only because the difference between the general election and the state election. The first point is that BJP is addressing 70% of Bengal. We are addressing 100% of Bengal. Any logical person can tell you that I would have a better chance. The second point is Bengal is a state of big districts. Very few people outside Bengal know this, that there are only 23 districts here. 9 districts of Bengal account for 185 seats. You tell me one district out of those 9 districts, where BJP is winning a full district. Can anyone win India without winning a large state? Similarly, you cannot win West Bengal unless you win big districts, South Chobis, North Chobis, Murshidabad, Mednipur. You are winning none of those districts. On what basis you are getting these 200 seats? 180 seats, you are nowhere. And those who are claiming, ask them if they are willing to fight from one of these seat in one of these districts. If they have guts, they should fight. Okay, you're talking with hard numbers. Let me talk and counter you with hard numbers. In 2014, 21% of Hindus voted for the BJP. In 2019, 57% voted for the BJP. In 2014, 40% of the Hindus had voted for Mamata Banerjee. The decline was 8% in Hindu votes for Mamata Banerjee in the Lok Sabha elections last time. Yes. Left or Congress ki to hum baat hi chhod dete, they are not in the reckoning. Yes. Muslims, 2% for the BJP went up to 4% in 2019. For Mamata Banerjee, 40 to 70. Okay. Your chink in your armor is the increase and dependence on the Muslim vote. Number one. No. Let me make my point. Upper caste votes for the BJP. My dependence is that I am looking at 100% as my denominator. My competitor is looking 70%. They need a better strike rate than I need because my denominator is big. I'm making a simple point. I'm not making it Hindu-Muslim. I'm saying I'm trying to win. Are you saying caste politics does not matter in Bengal? It does, but what I'm trying to tell you is that I have to secure 45-46% vote out of 100. They have to secure 45% out of 70. अपना टारगेट पहले से ही कम कर दिया. पहले आपको हिंदू के 40% मिलते थे. मैं ऐसे देखता नहीं हिंदू और मुस्लिम. मैं ये देख रहा हूं कि मुझे बंगाल का 45%. पर आप ये तो मानेंगे कि अपर कास्ट वोट जो है वो बीजेपी की तरफ गया है. 24 to 57%. ममता बनर्जी का 7% वहां कम हुआ है. ओबीसी का वोट बीजेपी की तरफ 14 और 19 के बीच में 21 से 65 गया है. 21 to 65 is a 300% growth. For Mamata Banerjee, again it has come down virtually half. Dalits have gone from 20% to 61%. These are big chunks we are talking about. These are chunks. No, but the chunk theory is being countered with the chunk theory. Of course, but all these numbers add up to 40%. All these 300, 600, 500% increase resulted into BJP getting 40% vote share. How are they going to move from 40 to 45 is the question. Which you think Prime Minister Modi and Amit Shah are not, people who are authorized or strategically in a position to answer and deliver? Of course they are. But so are others. If they are authorized, if they are very smart, if they are entitled to do what they think is going to work for them, others are also. Let me also put a counter question to you. 10 years of anti-incumbency is also a factor that you will have to factor in. It is a factor. You will also have to factor in. It is a challenge that there have been charges of corruption, there have been charges of tolabazi, there have been charges of, various scams. Have you heard any corruption charges against Didi? Mamata Banerjee. Acha. Have you heard this? Acha, to baki sab I'm asking you, is there anyone who can say that there is corruption charge against Didi? The Chief Minister is Didi. So you are the firewall around the Didi bastion. But people are voting for Didi. People are not. So Shubhendu Adhikari does not matter. I'm not naming the name. Who matters? This election is between Didi and the challengers from BJP, Mr. Modi, Shah, and whoever they want to add. And these elections are going to be between TMC and BJP. It is not about
anybody else. It is not about anybody Absolutely else. not. Not about people. Okay, let me ask you. Again, before I come to the question of the individual names, let me ask you the question of the AIMIM. You know what they did in Bihar. You know that if they come into your 30% chunk that you are saying, मेरा 100% है, उनका 70 है. कट करेंगे नहीं आपके They are most welcome to come here. आपके votes कट नहीं. I am telling you, they are most welcome to come here. In 2015 Bihar elections, MEM fought elections in Bihar. Their state president could secure 6,000 votes in one of the constituencies of Kishanganj. Through you, I call upon Mr. Owaisi to come and fight the elections in Bengal. 2015 से 2020 में कुछ नहीं बदला आप कह रहे हैं. ना बिहार में ना बंगाल में. See, it's a democracy. As much we are within our right to fight election, Mr. Owaisi is has the right to come and fight. He should come and fight. Let people decide. No, he will fight. I mean, of course, it is his democracy. He doesn't need your okay to come in and fight. I'm saying, जो आप अपना bastion कह रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं सेंध है, breach हो सकती है. I'm not saying it is you who are trying to say what is my bastion. I am saying my bastion is that my denominator is 100%. BJP's denominator is 70%. It is you who is continue to repeat that it's Hindu, it's Muslim. I'm not saying that. I'm saying we are addressing 100% of people of West Bengal, and we are confident that we are going to secure more than 45% vote share in Bengal. Let me ask you, do you agree that Shubhendu Adhikari was a man in Mamta's core team when Shingur, Nandigram happened, creating this whole groundswell for Mamta Banerjee? He was one of his foot soldiers at that point in time. So, do you admit? Without naming the names, anyone... नाम लेने से इतना दिक्कत क्या है? I'm coming to it why I'm not. So, anyone leaving the party is a setback. Having said so, first of all, journalists in Delhi, and I will include that, you also in that, Singur and Nandigram are two different things. They talk as if these are the same. They don't even know that Singur is different, Nandigram is different. He was a tall leader, but sometime in politics what happens is, it's good to be ambitious, but you shouldn't punch above your weight. Sometime, because of your ambition, you start thinking that an intermediate or medium-term fall of the party could be beneficial for you in the long run. And I'm so glad he himself said it in the meeting when he joined. He claimed, and I quote, that मैं तो 2014 से ही बीजेपी के टच में हूँ. Now you tell me, if you are in the place of Didi, would you like your trusted senior leader to be in touch with BJP since 2014? You mean to say she didn't know about it? I'm not saying that. It is what he claimed in front of all. She didn't know about it. What does it speak about the intel within the party? Maybe. What does it mean about loyalty within the party? What does it mean about trust within the party? This can be seen by any... What it means that she has been deceived. In life, I'd rather be the one who gets deceived rather than someone who is... This is where Prashant Kishore comes in. This is the image crafting. आप तो संजय लीला भंसाली की तरह एक हीरोइन जी का आप एक बना रहे हैं अंडरडॉग की इमेज. She has been wronged. She is not the wrongdoer. She is the wronged part. That's what I'm trying to tell, because he accepted it. Didi did not cut him. Didi did not give him less opportunity. In fact, as you are saying... I will prove to you otherwise. No. He was removed as the youth president, Abhishek Banerjee. No, he was removed from youth president and given the much bigger responsibility in the main party. And then when the main party... Then what happened? When he got in touch with BJP and he starts... That you know today, you didn't know then. No, of course we knew. If you knew then why didn't you chuck him out of the party because you were dependent on him? No, just go and check your facts. For last 1 year, his organizational responsibilities has been reduced for a simple reason, that's why I'm saying, he proved us right by publicly accepting that yes, while I was in Trinamool... Hold on, let me complete. Publicly he said, while I was in Trinamool, since 2014, I was in touch with the top BJP leadership. Now you tell me who is wrong, Didi
or Let he me himself? put the counter to you, Mr. Prashant Kishore. The fact of the matter is, there was the rise of Abhishek Banerjee, the nephew of Mamata Banerjee. One minute, let me complete. No. I allowed you to complete. Allow me to ask my question. I'm the journalist. You're the person facing the question. Okay. So let me ask. Abhishek Banerjee, nephew, party member. Yes, Mamata has never been accused of dynasty, but the fact is that there is a nephew who enjoys some power which is beyond possibly what other leaders think or perceive as his due, because they worked harder in building the party than Abhishek Banerjee has in its formative years. Point number one. Point number two, Abhishek Banerjee was virtually made in charge of these elections of the assembly. Absolutely not. I'm so and glad he you signed. He signed on that document where Shovendu got some. I'm so glad you said he enjoys some power, because some in media have gone berserk saying that he is the only power. You are right. He enjoys some power. He enjoys the power to bring in Prashant Kishore. No, he has not brought me. But let me put. Mamata Banerjee has brought you. Yes. Does Mamata Banerjee need you? And it's not Abhishek Banerjee's idea. Mamata Banerjee needs me as much as Mr. Modi needed me in 2014. So let's not get down that line. Those who are saying I'm a businessman, they should I'm not ask. saying No. The Trinamool Congress party members who you are meeting have called you. And let me. They can call whatever they want. आपको वो कहते हैं सकम कर्म भोगी. मतलब अपने काम का आप रिटर्न लेते हैं, पैसे लेते हैं और निष्कम कर्म योगी. चलो ठीक है. निष्कम कर्म योगी. शुवेंदु अधिकारी निष्कम काम करा पार्टी के लिए, अपनी जान दी. आप काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, पैसे ले रहे हैं. Hear me out. As a person, do you think, in your own wisdom, the people of Bengal are going to trust a lady who trusted a person called Suvendu Adhikari, or they are going to trust a guy who, in his own words, have backstabbed her? I leave the judgment to you and your viewers. मीर जाफर की कहानी दोहरा रहे हैं आप बंगाल में. मैं कुछ नहीं दोहरा रहा हूं. Let people of Bengal decide this. Who do you want to trust? Was Didi wrong in giving him responsibility, or was he wrong? Who do you want to trust? I want to ask you a question from the people. Let me complete. Or whether he was wrong that he took all the responsibility and at the same time opened the back channel discussion with BJP and, quote unquote, in his own words, was hobnobbing with BJP while he was in Trinamool. That I leave it to your viewers to judge. The second thing you said, that why Mamata Banerjee is dependent on me? Mr. Modi was dependent on me on 2014. So are you to say that he was dealing with a businessman? No, did I say? You started the interview. I'm asking. I'm telling you that if I am a businessman today, I was a businessman in 2014. So are you to say, all these BJP leaders, do they have guts to say that Mr. Modi was dealing and working with a businessman? So if he works with me, I was a political aide, and when Didi is working with me, then I have become a businessman. This is Shuvendu Adhikari saying that. This is I'm talking about BJP. This is not just Shuvendu Adhikari. Let me also name another. You are. मैं आपको बता देती हूँ कि this interview is not about who I am. For that you can have a separate rented warrior Sunil Mondal. Okay, so I am a rented warrior. Why are you worried about me? Why are you worried about me? Then win and you will see in May who is a rented warrior and who is grassroots leader, who has got better understanding of Bengal. People will see in May. वो तो ठीक है, मई में सबको पता चलेगा. मैं भी जानती हूँ, चाहे मैं दिल्ली से हूँ, चाहे मैं तमिलनाडु से हूँ, रिजल्ट तो सबको मई में ही पता चलेगा. ये बताइए, दिल्ली में भी तो यही लोगों ने कहा था ये रेंटेड वॉरियर है. There is a senior minister in Delhi central government. He said, who is Prashant Kishore? He was in charge of BJP state election in Delhi. BJP ended at 8, we got 62. So of course I am very happy to be called I am nobody. Let them be the big shots. Results should prove who is big, who is small. You still stand by the fact that absolutely BJP will not cross 100. If they cross 100, I repeat on your show, I will quit this space, meaning my work, forever. Will you contest elections then? now you say that whether you're going to jump in a well. No. Why? You think politics and fighting elections is jumping in a well? No. I'm saying people can extend that. I'm saying if I fail to deliver in what we are set out to, which is to win Bengal decisively, I have no business to do what I'm doing or claim to do what I supposedly I'm able to do. Prashant Kishore, and I have to be honest on that. And I mean it. You can hold me on this, and I'm not someone
who moves around with Jet Plus security. I pick my own phone, so after election you can find me and hold me accountable. No, I found you and we met in the queue of Tirupati. Yes. Last year. After winning that state, I still go there in the queue only. Yeah, तो हम उसी क्यू में मिले थे और मैंने उस समय भी आपसे पूछा था. I know it's a personal anecdote, but I was asking you at that stage. You were not formally looking after West Bengal, as the political aid. And you said BJP has an edge at that time. Yes. You think you've been able to not take away the edge? Didi has been able to do whatever was needed, or I would say almost everything that was needed to be done on her part. She has been proactive. She has been doing both as a chief minister and the leader of TMC. 1 year and a half, as you as a political journalist, you understand, is a very long time. Post Lok Sabha, there has been a great deal of effort on the part of Trinamool and its leadership, and they are much better placed today to win Bengal than what they were probably in May 2019. If Didi has been so confident and poised about her victory. One last thing on this, who has got me here, just to put facts correct here. Now you're on the defensive. No, I'm not. Because you are. No, I'm not. Let me put the facts. Abhishek Banerjee और प्रशांत किशोर का जो कॉम्बिनेशन है ये तृणमूल में भगदड़ मचा रहा है. In BJP, all Amit Shahji calls all shots. Is it to say that Mr. Modi has become redundant? If someone is calling a shot in a party or someone is important in important. So you're saying Abhishek Banerjee calls the shot? No, I'm saying something else. But you are jumping on it. I'm saying that any leader who operates, they will operate with some aids, and some aids would be important. That does not mean that leader does not exist. Just because Mr. Amit Shah is running the affairs of BJP, that does not mean that Mr. Modi is retiring or he is handing over the power to Mr. Amit Shah. Can we say that? If you cannot, then do not accuse, as he accused, that Didi to मुख्यमंत्री छोड़ने वाली हैं, वो अभिषेक को बनाने वाली हैं. This is outrageous claim to make. One can make from Trinamool the claim that now all the calls in BJP are taken by Mr. Amit Shah. So Mr. Modi is leaving. He will hand over the charge to Mr. Amit Shah. एक तरफ आप कहते हैं small time political aid and you are giving lessons to people, don't punch above your weight. No, I'm talking. और आप मोदी और अमित शाह से कम बात ही नहीं करते हैं, तो ये आपसे लोग पूछेंगे कि कल आप मोदी जी के एड थे, आज आप उनके चैलेंजर. मैं कहां उनका चैलेंजर हो सकता हूं? मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूं. उन्होंने ऐसा आकर कहा, अमित शाह जी ने ऐसा कहा कि दीदी अब तो सिर्फ इसलिए लड़ रही हैं कि वो अभिषेक को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती हैं, और उसके सपोर्ट में उन्होंने और आपके जैसे लोग ये कह रहे हैं कि अभिषेक कॉल्स ऑल द शॉट. आई एम गिविंग यू एन एनोलॉजी दैट इफ दैट इज ट्रू, then Mr. Shah is calling all shots of BJP since 2014. So are we to say that Mr. Modi does not exist? Well, any top leader will work with some people around him or her. I want to ask you another direction of the reason why the TMC looks like it is rattled. And let me point out a few instances. It is looking rattled in the eyes of those who are sitting in Delhi. चलिए आप घर वाले बाहर वाले जो हमको बुला लीजिए. आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं नैरेटिव. घर वाले बाहर वाले. I have not said it. हर इलेक्शन में आप हम जैसे दिल्ली के जर्नलिस्ट को तो ऐसे गाली दी जाती है जैसे हमें तो कुछ नहीं हमेशा ही कहा जाता है. अगर बिहार का इलेक्शन हो, अरे दिल्ली में बैठे आपको क्या पता, तमिलनाडु का इलेक्शन, अरे दिल्ली में बैठे आपको क्या पता. बट सी, कभी आप सही होते हैं, कभी हम भी सही हो जाते हैं. आई थिंक देयर इज नॉट टू मच ऑफ अ गिव एंड टेक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल स्कोर कार्ड. बट लेट मी आस्क यू, चाहे मैं गलत हूं या सही, मैं जर्नलिस्ट हूं और मैं ये हक रखती हूं सवाल पूछने का. मेरा हो सकता है आपको फायदा ये भी है कि जब चुनाव का रिजल्ट आपके कहे के अनुसार न आए तो तुरंत आप दूसरे साइड हो जाए. बिल्कुल, क्यों नहीं. तो वो आपको एज अ जर्नलिस्ट आपको अधिकार है. बिल्कुल मेरा अधिकार है और मेरी ड्यूटी है. मेरी ड्यूटी है टू आस्क बोथ साइड्स द टफेस्ट क्वेश्चंस पॉसिबल एंड गिव द काइंड ऑफ सिनेरियोस दैट आई शुड टू द पीपल फॉर देम टू नो व्हाट्स रियली गोइंग ऑन. डिड आई टेल यू नॉट टू आस्क मी एनी टफ क्वेश्चन? सो मैं आस्क मी व्हाटएवर यू वांट. नहीं, आप डिफेंसिव हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा आपको मैं डिफेंसिव लग रहा हूं. मेरे को ऑफेंसिव होना पड़ा बताने के लिए कि हर वक्त दिल्ली के पत्रकारों को गाली देने से आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगी. गाली कौन दे रहा है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि आप, क्योंकि आप हमें लिंक कर देते हैं बाहर से आने वाले लीडर्स और दिल्ली से आने वाले पत्रकार. मैं भी बाहर से हूँ, मैं भी तो बंगाल का नहीं हूँ. एग्जैक्टली. लेकिन मैं यहाँ 1 साल से हूँ
मैं यहाँ पैदा हुई। बिल्कुल, मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा हूँ। जो पॉलिटिशियंस आके, मान लीजिए आप 5 दिन के लिए बंगाल में आए, कुछ शहर घूमे, कुछ लोगों से बात करी, उसके आधार पे आपने कह दिया ये पार्टी इतनी सीट जीत रही है। शायद संभव है 10 बार में एक बार आपका तुक्का लग भी जाए, लेकिन उसका कोई मेथड नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो। इट्स अ वेरी बिग, ऑल आई एम सेइंग इज अ लार्ज स्टेट complex. It's not so easy to call election even in a small state like Delhi. Even in Haryana, it's not easy. Possibly the smallest state. So I want to ask you why I'm saying that bhagdad, rattled. मैं क्यों कह रही हूँ? 7 MLAs, then 7 out of 270. तो मैं राजीव बैनर्जी की बात करती हूँ। बात चल रही है कि वो छोड़ के जाएंगे। अब मुझे तो पता नहीं, आपको पता है तो मुझे बता दीजिए। हाँ, 12 जनवरी को अमित शाह फिर से आ रहे हैं, ये भी रिपोर्ट कह रही है, और एक बारात जाएगी यहाँ से। अगर आपको उन्होंने बताया है कि 12 को वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको तृणमूल के और लोगों को ज्वाइन कराना है, तो आप व्यूअर्स को ये बता दीजिए पहले से। उनको एजेंडा जैसे वो लोग अपना मिनट टू मिनट भेजते हैं, उसमें ये भेज देना चाहिए कि इतने पार्टी लीडर्स को ज्वाइन करा रहे हैं। ये मुझे बताने की उनको जरूरत नहीं है, ये आपके कैंप में बातचीत है। मैं कलकत्ता में हूँ, कल से पता है, मुझे यहीं से पता चल रहा है, जो पता चल रहा है। मुझे ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर के 45 MLA क्लेम के बाद 7 MLA 1.5 साल में 7 in total 7. So let's put this. Will it number. stop at 7? No, question number 1. It will not stop question at 7. number 2. It will not stop at 7. But. So you are expecting some more to go? No, but Howrah was your area. If Howrah goes, no, it's not. It's not about Howrah and Mednipur. I am telling you, if you have 230, if you have 230 MLAs and you are facing a formidable challenger like BJP, who believes in poaching by hook or crook, sometime by incentive, sometime by coercion. Hold on, let me complete. It is very likely that you would lose some of your leaders. It is unfortunate, but this is the reality which we know. In Bihar, 2015, you are talking about a minister and an MLA. BJP poached the chief minister and 2/3 of the cabinet. Mr. Manji with 2/3 of the cabinet went on, left Nitish Kumar and went on the BJP side. Whole lot who were believing in what BJP was trying to present in Bihar, they gave this impression as if Nitish Kumar was not it was not Nitish Kumar who made Manji, it was the other way around, that Manji is the one who made Nitish Kumar. Similarly, people are trying to make such a script in Bengal that it's not Mamata Banerjee who has made these leaders. You are trying to give me an impression that all these MLAs have made Mamata Banerjee. आपको जो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है आप उसको बिलीव करिए। मैं यहाँ आपको कन्विंस करने नहीं आई हूँ। मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ कि आप मुझे एक इलेक्शन बता दीजिए। 2 शब्द कहे, एक इलेक्शन बता दीजिए। इंसेंटिव, कोअर्शन। Yes. Specify. What incentive is the BJP offering? Incentive is you can offer a ticket because you are a party with not too many contenders in many seats, so you can offer ticket to someone who is not sure of getting ticket in Trinamool. And coercion is, I'll leave it to you. No, I don't understand. क्योंकि मैं तो दिल्ली से आई, मुझे कैसे समझ आएगा? No, दिल्ली में दिल्ली वालों को तो कुछ समझ में नहीं आता है। दिल्ली में भी तो आप कोर्सन क्या होता है सर, हमें समझा दीजिए। कोर्सन ये होता है कि भैया अब यहाँ से ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम पर ये CBI का केस है, उसको कल तुम्हारे खिलाफ लगा देंगे। अच्छा, तो कल तक जो आप कह रहे थे कि नारदा शारदा, मैं नहीं कह रहा था, बीजेपी के वेबसाइट पे लगाया वो उन्होंने। TMC तो कह रहा था कि ये बेबुनियाद चार्जेस है, नारदा शारदा स्कैम कुछ है ही नहीं। सो कॉल्ड 2 सबसे बड़े लीडर तृणमूल के आज बीजेपी में हैं, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी। उन दोनों का फोटो वीडियो मेरे पास नहीं, बीजेपी के वेबसाइट पे लगा हुआ है, और किस कॉन्टेक्स्ट में लगा हुआ है आप और आपके व्यूअर्स देख सकते हैं। अब नहीं, अभी हटाया, अभी फेसबुक पर अभी भी है, और लोगों ने अब उसका फोटोशॉट लेके पूरे बंगाल में घुमाया है। लोग दिखा रहे हैं कि भाई ये 2 लोग हैं जो सो कॉल्ड तृणमूल में थे। जब तक ये लोग तृणमूल के साथ थे, इन्हें वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं थी, डिटर्जेंट की जरूरत नहीं थी। अब आपने गाली देनी शुरू कर दी कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है। मैंने वो कहा नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि एक्सप्लेन कोर्सन। So if you have skeletons in your cupboard, sometimes. So you admit TMC के लोगों में skeletons in the cupboards हैं. Some people might have. So corruption हुई है वेस्ट बंगाल की सरकार में. वेस्ट बंगाल की सरकार में corruption हुई है, skeletons हैं cupboard में. आप don't try to create a headline. No, why? I can. आपने कहा coercion, मैंने आपकी बात सुनी. मैं आपसे पूछ रही हूँ. मैं कह रहा हूँ coercion है, मैं पीछे कहा रहा हूँ. और आप कह रहे हैं कि skeletons in the cupboard भी हैं. If no, I'm saying if you have. आप मुकर रहे हैं. बिल्कुल, आप अपनी शब्द तो मेरे मुंह में डाल नहीं सकते हैं। मैं जो कह रहा हूँ आपके सामने बैठा हूँ, जो लीडर्स
if you are a leader who has got a skeleton in your cupboard, you might face the coercion. डर गए आप मेरे सवाल से। ठीक है, चलिए आपसे डर गया। हाँ, आपसे डर गया। पहले आपने कहा स्केलेटन्स हैं जिनके वो जाएंगे। वो डर सकते हैं, यही तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी में और इंग्लिश में। तो जो गए हैं उनके स्केलेटन्स हैं, जिसका मतलब करप्शन तृणमूल में हुई है। भैया उस हिसाब से तो बीजेपी में लोग करप्शन फेस कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे पूरी बीजेपी करप्ट है? अच्छा, तो चलिए इतना तक तो हमारी वी हैव अग्रीड ऑन अ बेसिक मिनिमम दैट कुछ करप्शन थी, सब करप्ट नहीं है। यहाँ तक तो हम पहुंच गए। आप जहां तक पहुंचना चाहते हैं अपने दिमाग से पहुंच जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी में, सरकार में कोई व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल अगर करप्ट है या उससे गलती हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पार्टी या पूरी लीडरशिप उसमें इन्वॉल्व है। उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। इफ यू आर वल्नरेबल, देन बीजेपी इज ए पार्टी दैट माइट यूज that to their advantage. That's the point I'm saying, and it is not unique to West Bengal. And what about your vulnerability? It has happened. It has happened in Gujarat. It has happened in every state wherever BJP has gone to fight election. They use this as a method, tactics that seem to have worked for them till now in many elections. And let me talk about but your vulnerability. In Gujarat, last Gujarat Assembly election, I must complete this. There was this feeling that entire Congress is going to get wiped off. More than 1/3 MLAs of Congress joined BJP. And you saw when the result came, Congress, with all their limitations, they gave one of the best fights they have given to BJP in that state in recent past. In Andhra, where I worked, Chandrababu Naidu broke YSRCP and took 23 MLAs of YSRCP. 23 MLAs out of 70 which they won. 23 out of 70. And how many he was reduced to? TDP was reduced to 23 in the elections. So MLA going because of some incentive, because of some issues with the party, because of coercion, are not. It is unfortunate. It shouldn't happen, but that cannot be the single barometer to decide who is winning. थोड़ा सा फर्क मैं बता दूं। चंद्रबाबू नायडू के please highlight. Chandrababu Naidu was ruling. Chandrababu Naidu's own flip-flops in political relationships had actually undercut his image in the past, and his election result. I'm telling you that if MLAs leaving a party would have been the single most important gauge of popularity or possibility of a party winning election, then TDP should have swept Andhra. That's the limited point I'm making. I'm telling you कि आप गलत assumption कर रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, मैंने गुजरात का भी एग्जांपल दिया, आप भूल रही हैं। आप एक मिनट, आप गुजरात बीजेपी का बात कीजिए। चंद्रबाबू नायडू इंकम्बेंट थे, गुजरात बीजेपी की बात कीजिए। आप डर क्यों रहे हैं? मैं क्यों अभी तक तो मुझे डरा रहे हैं। बीजेपी मेरी कंपनी है, ना तृणमूल मेरी कंपनी है, ना टीडीपी मेरी कंपनी है, ना जगन रेड्डी की पार्टी मेरी कंपनी है, ना मैं आपकी तरह आईपैक चलाती हूँ जो पॉलिटिकल एडवाइसेस देती है फॉर अ कंसिडरेशन टू वेरियस लीडर। मैं सिंपल पत्रकारिता सवाल पूछने का काम करती हूं, मैं कह रहा हूं, और पिछले 28 सालों से कर रही हूं। 2018 में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, गुजरात से 20 से ज्यादा एमएलए कांग्रेस के छोड़कर बीजेपी में चले गए। सेम लीडरशिप ऑफ बीजेपी ना, एक मिनट, बीजेपी जीत गई ना। चंद्रबाबू नायडू वाला हाल तो नहीं हुआ ना। और बंगाल में आप बोलने नहीं देते। थोड़ी सी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग मैंने भी इकट्ठी की है। चलिए बोलिए। बंगाल में बीजेपी इज अनटेस्टेड टेरिटरी। There is a change, and change sometime. পরিবর্তন বুঝতে পারেন দাদা? বাবু মশাই, পরিবর্তন was the theme in Bihar in 2015. They were routed to 50. They were not ready then. Are you saying now they're ready? You are saying that 2015 to now BJP has not gained anything. You just admitted that from 3 seats in assembly to 99 तो आप इस बार दे रहे हैं, from 2 seats in लोकसभा, एटलीस्ट आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट आ सकते हैं 99, so possibility of 99 तो आप दे रहे हैं। Yes. 99 नहीं दे रहा हूं। अगर 99 उनको दे रहा हूं तो फिर दूसरे का भी नंबर बताइए। भाई आई एम सेइंग अप टू 99। आप 100 से ज्यादा नहीं दे रहे। 99 से कम 99 तक भी दे रहे हैं। हो सकता है, लेकिन अगर 99 लोकसभा में 2 से 18 बीजेपी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं। आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग। नहीं कर। इफ वी वुड हैव बीन अंडर एस्टिमेटिंग, आपकी वल्नरेबिलिटी, आपकी मजबूरी बताइए। चक्रधर महतो
चक्रधर महतो। चक्रधर महतो जी, झारग्राम के हैं। झारग्राम के जी। माओइस्ट लिंक्स जी। और आपको पता है असैसिनेशन ऑफ सीपीएम चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य का 2008 में NIA is to the best of my knowledge. माओइस्ट के साथ लड़ेंगे इलेक्शन। Hear me out. You have asked the question, I am replying. To the best of, I have not met the guy, so I don't know what his background and all is. But to the best of my knowledge, he is being investigated by NIA. NIA is under who the bosses of NIA is. If he is linked, he has linked with Maoist, he must be tried, put to jail, and till such time he is of use to the Trinamool Congress, and you will make use of him. No, he is there in the party. He is in the party. बोलपुर, ये वही जगह है ना जहां जय श्री राम कहने पर ममता बनर्जी को गुस्सा आया था। उसके बाद अमित शाह जी ने वहां पर रैली लगाई। अब 29 तारीख को ममता बनर्जी वहीं पर रैली करने जा रही हैं। जी। ये रैटल्ड नहीं है, नर्वसनेस नहीं है, तो क्या है? बिहार में फिर आपको एग्जांपल दूंगा जो मैंने पहले फेस किया हुआ है। बिहार में मोदी जी आए, उन्होंने रैली करी, उसके बाद अगर लालू जी या नीतीश जी जाकर वहां रैली करते हैं तो इसका मतलब हम वो रैटल्ड हैं। I also want to bring up another issue of why you are looking rattled. Okay. I'm looking. Sometimes you're saying JP Nadda attack on him. Okay. In the constituency of Abhishek Banerjee. Number one. Number two. बोलपुर, ये वही जगह है ना जहां जय श्री राम कहने पर ममता बनर्जी को गुस्सा आया था। उसके बाद अमित शाह जी ने वहां पर रैली लगाई। अब 29 तारीख को ममता बनर्जी वहीं पर रैली करने जा रही हैं। जी। ये रैटल्ड नहीं है, नर्वसनेस नहीं है, तो क्या है? बिहार में फिर आपको एग्जांपल दूंगा जो मैंने पहले फेस किया हुआ है। बिहार में मोदी जी आए, उन्होंने रैली करी, उसके बाद अगर लालू जी या नीतीश जी जाकर वहां रैली करते हैं तो इसका मतलब हम वो रैटल्ड हैं। भाई आप एकदम बाद में, मैं बता रहा हूँ एकदम बाद में या एकदम पहले, मैं उसको बता रहा हूँ। आप डिफेंसिव स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मेदिनीपुर में दीदी ने रैली किया, उसके बाद अमित शाह आके मेदिनीपुर में रैली करते हैं। आप तो यहाँ सरकार है आपकी, वो तो हर जगह जाएंगे आपके पीछे। मेदिनीपुर में हम लोगों ने रैली की, उसके बाद अमित शाह आए वहां रैली करने, तो आप कह रहे हैं कि वो उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। बोलपुर में उन्होंने रैली की, हम लोग रैली कर रहे हैं, तो हमको डिफेंसिव आप बता रहे हैं। आप अपना लॉजिक बता दीजिए कि कौन सा फॉलो करना चाहते हैं। पर लग तो रहा है कि वहां जय श्री राम के नारे लगे, उसके बाद से थोड़ी सी जमीन, क्योंकि आपको तो 100% एड्रेस करना है ना, लेकिन 70% अगर स्ट्रांग हो गया, स्ट्राइक रेट ज्यादा हो गया, तो आपको डर लगता है। आप कोशिश करते रहिए, मेरे को नहीं करनी है ना। मतलब वो लोग कोशिश कर सकते हैं। बोलपुर का जो रोड शो है, जिसमें की सो कॉल्ड क्राउड की इतनी बात हो रही है, इट वॉज ए 1 किलोमीटर स्ट्रेच in which there was about 3 किलोमीटर I'm understanding चलेंगे। Hear me out. There was about 30 to 40,000 people to the best of our estimates. Maybe 10,000 plus or minus. In these kind of gathering, people make all kinds of claims. उस 30,000 में से बाहर से लोग भर के आए थे, वो भी मान लो छोड़ दिया कि सब लोकल ही थे। 30,000 लोग की रैली हो गई, तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग इतने रैटल्ड हैं। एक सिंगल प्रोग्राम द्वारे सरकार अभी गवर्नमेंट जो कर रही है यहाँ पे, उसमें डेली 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, आपको पता भी नहीं है। क्योंकि आपको करना पड़ रहा है। 5 साल आपने तो किया नहीं, हमारा काम है 8-9 साल आपने किया नहीं। अब जब आपका गवर्नेंस रिकॉर्ड चेक हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा। ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि द्वारे सरकार में पिछले 15 दिनों में 1 करोड़ 35 लाख, I repeat, 1 करोड़ 35 लाख लोग अगर आ रहे हैं, forced to do द्वारे सरकार, which you didn't do for 9 years, which was your job to do for 9 years. No, because it was your job to do for 9 years and you didn't do it. You're doing it now, तो एहसान है क्या लोगों पर? Because of बोलपुर नहीं, आप बिकॉज ऑफ बोलपुर। अब आप तो देखिए ना, अब अमित शाह आके अगर मेदिनीपुर में दीदी के रैली के बाद रैली करें तो वो उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। हम लोग अगर बोलपुर में उनके रैली के बाद जाए तो हम लोग को रैटल बता रहे हैं आप। मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आपके व्यूअर्स पर छोड़ रहा हूँ जज करने के लिए। CAA NRC कोई इशू है इस इलेक्शन? कोई इलेक्शन, कोई इशू इस इलेक्शन का तो छोड़ दीजिए। इलेक्शन, ये इशू तो बीजेपी ने बनाने की कोशिश की थी, मैं साल भर पहले। बंगाल के चक्कर में पूरे देश में कोहराम मचा दिया। अब उनको लग रहा है कि इसका फायदा बंगाल में भी नहीं है, तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये इलेक्शन पर ममता बनर्जी आज बीजेपी के एजेंडे डेवलपमेंट पे चलेंगी। ममता बनर्जी अपने डेवलपमेंट के एजेंडे पर चलेंगी। बीजेपी का डेवलपमेंट का एजेंडा बंगाल में कब से हो गया? बीजेपी का यहाँ एजेंडा तो CAA NRC है।
पर ममता बनर्जी ने कल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े दिए ऑफ द हेल्थ स्कीम, ऑफ एजुकेशन, सरकार के उन्होंने दिए, और उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उसमें उन्होंने कहा कि मैं सही फैक्ट्स दे रही हूँ, अमित शाह जी ने गलत दिए थे, अब वो मुझे ढोकला खिलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? बंगाल में भी लोगों को ढोकला अच्छा लगने लगा है। यहाँ मतलब यहाँ क्यों हम लोग दिल्ली में बैठ के साउथ इंडियन डोसा खा रहे हैं डेली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स दिल्ली की पॉलिटिक्स को डिफाइन करने लगेगी। अच्छा, तो ये ढोकला वाज जस्ट एन असाइड। She might like ढोकला, I don't know. You will have to ask her when you meet her next. You ask her कि आपको ढोकला ज्यादा पसंद है या नहीं, पर मैंने सोचा कि शायद भाई अब अमित शाह जी आ रहे हैं तो उनको बंगाली खाना ही पसंद आ रहा है, तो इसलिए शायद उन्होंने कहा होगा कि हम लोग को भी गुजराती खाना पसंद है, उनको भी गुजराती खाना पसंद है, उसमें क्या दिक्कत है? तो फिर ये घर वाला बाहर वाला जो डिबेट है ये खत्म हुआ। यहाँ के लोगों को अगर ढोकला पसंद आने लग गया, अमित शाह जी को बंगाली खाना, ये तो उन्होंने बताया कि यहाँ का धरती पुत्र ही कोई मुख्यमंत्री होगा। हम लोग थोड़ी ना कह रहे हैं, ये तो वो कह रहे हैं, ये तो वो कह रहे हैं, हम लोग कहाँ कह रहे हैं ये बात? प्रशांत बंगाल का चीफ मिनिस्टर प्रशांत किशोर जी, आजकल सुनने में ये भी आया है कि आप हर एमएलए की, कॉर्पोरेटर की अटेंडेंस लेते हैं, वो क्या कपड़े पहनेंगे, कितने रैली पर जाएंगे। मुझे अपने कपड़े का ध्यान नहीं है, मैं दूसरे के कपड़े का बाकायदा आप बाबू मोशाई बन के आए हैं। अरे भैया, मैं यही कपड़े पहन के आपके स्टूडियो में 1 साल पहले भी आया था, पर सुना है तो इसलिए सॉल्व लिया हुआ है। सुना है कि आप सबकी स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, क्या इससे इलेक्शन जीते जा सकते हैं? फिर मैं आपको वही बात बताऊंगा, जो लोग इस तरह की ट्रिवियल बातों का इशू बनाने का प्रयास करते हैं, अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो उनको इस बात का ध्यान होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि उनके लीडर, अगर मैं ऐसा करता हूं तो उनके लीडर्स को भी मैंने कभी बताया होगा कि किस कलर का जैकेट पहनी है। तो दे शुड बी केयरफुल बिकॉज दे डोंट नो many things. They are working. They should focus on Bengal. They should focus on fighting on the issues. Last question. Not what I'm doing with MLAs of Trinamool. Last question. Yes. For this Bengal edition, क्योंकि अब तो तमिलनाडु भी आप ही के साथ बात करनी है, तमिलनाडु में यहाँ भी तो हम ये ले जाएंगे चेन्नई और वहां पे तमिलनाडु की बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले बंगाल के बारे में सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। फाइनल टैली में आप तृणमूल को कितनी सीटें देते हैं? Trinamool will have a decisive victory. Number? I cannot call the number, but when I below say, 224. No, when I'm saying BJP will be less than 100, it clearly says that Trinamool will have a decisive victory in West Bengal. And left and Congress don't matter? I think to my mind it's a completely bipolar election, straight BJP versus TMC. यूपी के लड़के भी आपके क्लाइंट थे कभी? मेरा कोई क्लाइंट नहीं है, but यूपी we will discuss. If you want to discuss यूपी, we'll discuss यूपी separately. राहुल गांधी पर कोई विशेष टिप्पणी? मेरी क्या औकात है कि मैं राहुल गांधी पे टिप्पणी करूं? और प्रशांत किशोर, आपने चैलेंज अगर दिया है कि बीजेपी डबल डिजिट से आगे नहीं जाएगी, नहीं तो यू विल क्विट दिस स्पेस। आई एम कमिटेड। I will quit. I will cease to work as you have seen me working in last 4, 5, 6 years. Well, we'll meet again. First, hold me to it. Hold me to this. First interview, election season came early in December when we were expecting it somewhere in January end. So it doesn't mean this is our last engagement on Bengal. Not at all. Viewers will look forward to more questions to you. Always a pleasure. As either you become more composed and poised or more rattled and भगदड़। बात हम फिर करेंगे, पर frankly speaking पर frankly बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for having me. Thank you. Thank you. ভালো হয়েছে।